Seeds will cost you 15 times more, over $170 per kilogram. That's because, to achieve that pop, farmers in India work tirelessly for over 4 days, wading through water up to 4 feet deep, kneeling in the scorching sun and roasting the seeds in a carefully managed series of heated woks. Even when everything is done just right, there's no guarantee that a seed will actually pop. So, are water lily seeds worth it? And why are they so expensive? Makhana, as they're known locally, are the seeds of the prickly water lily plant. Once they're popped, they are known as foxnuts. They're a popular snack in Bihar, India, the origin of 80% of the world's supply. बेस्ट क्वालिटी मखाना आपको एक तो उसका स्वाद हल्का मीठापन रहेगा और जो लो क्वालिटी है उसका टेस्ट आप कह सकते हैं एक सॉल्टी हो जाता है, नमक जैसा हो जाता है जो खराब मखाना हो जाता है, क्योंकि उसका कलर ही चेंज हो जाता है। उसमें वो वाइट रहता है, ये हल्का ब्राउन पे आ जाता है। On the surface, water lily plants look like lotus, gigantic leaves floating on the water. But the differences reveal themselves upon a closer look. Each plant is covered in thorns. These barbs pose the main danger to workers harvesting the seeds. हम लोग का कोई दिक्कत थोड़ा दिक्कत होता है इसमें, ये बात कांटा चुभ जाते हैं, दिक्कत है, क्या करेगा गरीब लोग, जो कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? Lakshmi has been harvesting water lily seeds for 35 years. He belongs to the Mullah community, which has farmed and processed foxnuts for generations. हाथ से उठाते हैं, देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसमें सब में कांटा है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 फल है, कर गया, हाथ में चुभ गया, हाथ में चुभता है। Harvesting is hard work. The seeds are at the bottom of the pond, and the water is not clear enough to see and avoid the thorns, so Lakshmi uses a stick to move the plants aside. Each plant can yield anywhere from 70 to 125 seeds. They need heavy rains in the spring to start bearing fruits, which contain seeds. When summer comes, the fruits start to rot and release the seeds. तो वो गलने के बाद तो पहले पानी के ऊपर तैरता है, और तैरने के बाद जब वो धूप का टेम्परेचर से सड़ता है वो, तो नीचे सतह पे जाता है, मिट्टी में पकड़ लेता है वो मखाना का बीज, और जब वहाँ वो 1 महीना रहता है मिट्टी के संपर्क में, तब जाके पूरी तरह से वो मखाना तैयार होता है निकालने के लिए कीचड़ से। But not all seeds are fit for harvesting. Some are deformed or unripe, and Lakshmi can't harvest them today. ये भाटिया के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है, पकेगा, छिलका गलेगा, काला होगा, बैठेगा जमीन पर। At the same time, ripe seeds can't stay too long in the pond, otherwise they won't pop and will sell for less. Workers feel the seeds with their hands coming to the surface and direct them towards a special type of basket called a garja, which they use to clean the seeds and separate them from the mud. ये अपने भागेगा, तो मिट्टी को तोड़ेगा, और मेहनत की चीज़ है, ये मखान का बीज है ये। Despite their best efforts, collecting all the seeds in the pond is impossible. Water lily seeds are small and dense, meaning some seeds will sink to the bottom of the pond, where farmers can easily overlook them. Lakshmi and the other 4 workers start their day at 6 a.m. and end at 4 p.m. In this time frame, they harvest an average of 100 kilograms of seeds per day. इसका कोई नियम नहीं है, कभी 2 कुंटल हो सकता है उसमें, कभी नहीं रहने पर, होने पर जो जैसे फसल है, फसल पैदा ज़्यादा हुआ, उसमें 2 कुंटल निकाल लेते हैं। अभी कम है फसल, कम हुआ, अभी पतला माल है।
A successful harvest has a lot to do with the weather. This has a direct impact on the size of the water lily flower, and in turn, the quality of its fruit and seeds. पौधा बोला, पौधा में एक लाल लाल होता है, इतना बड़ा डंडी, उसमें जैसा कमल जानते हैं कमल, उसमें वो कमजोरी क्या हुआ, इसमें धूप आया, गर्मी आया, इस बात तो पहले हम आप लोग को बोले, इसमें गर्मी से ये ऐसा हो गया, इतना फूलना चाहिए, जैसे कमल को फूल होता है, इतना फैलना चाहिए, वो उसके धूप लग गया, खत्म हो गया, ये फूल खत्म हो गया. Water lily seeds are harvested in 2 waves each season. The second harvest is even harder because there are fewer seeds in the pond and workers have to search for the seeds that have been left behind in the mud. While the first time around a pond can yield up to 150 kilograms of seeds, there could only be around 10 kilograms during the second harvest. Once out of the water, workers stomp on the freshly collected seeds to remove the outer skin. Then, they place the seeds back into the basket and take them back to the water to clean. All of today's harvest is then weighed. This moment will determine how much Lakshmi and the other 4 workers are paid. They usually receive 31 cents per kilogram in the first harvest, and 62 cents per kilogram in the second, as the work is much harder. Today is the first harvest. They collected 50 kilograms of seeds. अभी इसमें कम फसल है, थोड़ा हुआ है, 50 किलो हो गया, 4 जन कितना हुआ, 12.5 किलो हुआ, 12.5 किलो कीमत कितना, 312 रुपया हुआ. इसमें क्या हम शराब पिएगा, क्या दारू पिएगा, क्या मछली लेगा, क्या मीठ लेगा. When the seeds are freshly harvested, they are worth 22 times less than popped seeds. To successfully pop a seed, it can take up to 4 days of work. At the processing facility, workers clean the seeds once more. The next step is to sun-dry the seeds to remove all of their water content. गीला सा रहता है, अब तो खाने के बाद जो है ना, गुड़िया पाउडर की तरह हो जाता है पाउडर. कच्चा गुड़िया फोड़िएगा तो उसमें गीला रहता है अंदर में, गीला सलाबा नहीं बनता. The amount and quality of sunlight the seeds receive is crucial in determining whether they will pop or not. अगर हम मान लीजिए 2 घंटा हम सुखाते हैं, 2 घंटा में हमारा पूरी तरह से जो मखाना का अंदर जो स्टार्च है उसमें पानी जो सुखाते हैं 2 घंटा में, वो 2 घंटा सामान्य रूप से धूप मिलना चाहिए. After 2 hours, the seeds are sorted and graded by size. Bigger seeds need more time under the sun, while smaller seeds will rot if exposed to too much sun. To know when the small seeds are ready to be taken out, workers can either bite into them or roast them. और उसका ये स्टार्च देखा जाता है कि पूरी तरह से दाब के देखा जाता है फोड़ के, कि वो बिल्कुल जैसे बिखरे नहीं, एक दूसरे में चिपका हुआ रहना चाहिए. वही टेस्ट करते हैं, मेन टेक्निक उसमें वही है. When the big seeds are dry, the whole batch is ready to undergo a gentle roasting in a clay wok. The seeds are still very fragile and can't withstand very hot temperatures. उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो गुड़िया ख़राब हो जाता है, जल जाता है. मिट्टी वाला में टेम्परेचर कम रहता है तो जलता नहीं. This is the first real test to determine whether the seeds have a chance to pop. उसके बाद आगे में जाके आगे में कलाकार बैठा रहता है, उसको जचैया करेगा कब होगा कब नहीं होगा. उसके बाद अगर जो देखता है हो गया तो घानी निकाल के रखता है, छिट्टा टोकरी में रखता है अपना. Roasting is a 20-hour process. After the first roast, the seeds need to rest overnight for 15 hours. The next day, they're ready to be popped. It takes 10 people to roast 100 kilograms of water lily seeds. Out of these 100 kilograms, only 35 kilograms will pop.
and become good quality fox nuts. For this second roast, the woks are made of iron. The seeds are strong enough to retain heat, and that's what they'll need to pop. The seeds roast in a series to roast 100 kilograms of water lily seeds. Out of these 100 kilograms, only 35 kilograms will pop and become good quality fox nuts. For this second roast, the woks are made of iron. The seeds are strong enough to retain heat, and that's what they'll need to pop. The seeds roast in a series of 6 different woks, so they can be carefully heated up. देखता है जो हो गया और निकाल के अपना रखता है, नहीं तो एक ही में भूनते रहेगा एक ही तोला पे, तो इतना 1 कुंटल मखाना फोड़ने में आदमी को लगेगा 3 दिन लगेगा, ऐसे में 1 दिन लगता है। When a seed is ready to pop, it will make a crackling noise, which is almost imperceptible. वो केवल वो जो आगे में जो बैठा रहता है वही जानता है, क्योंकि उसमें गुड़िया निकाल के चेक करता रहता है सेकंड भर में। और क्योंकि इसमें जो है हाथ का इस्तेमाल रहता है, हम लोग को जैसे मान लीजिए हाथ का इस्तेमाल है, किसी गुड़िया में ऐसा होता है कम ताकत लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए जो आदमी का कलाकारी मानिए ना, आज जैसे आप लोग को दे दीजिएगा तो आपसे होगा नहीं। To pop the seeds, workers use a paddle called a thapi. But even with the right technique, some seeds will just not pop. अगर हम उसमें 100 ग्राम सीड है हमारा उसमें, तो उसमें 10 से 15% उसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि 10 सीड जो हम लोग हाथ में लेके फोड़ते हैं तो 10 का 10 लावा बनता नहीं, 10 पे चोट नहीं लगता है। वो टाइमिंग 4-5 सीड 2-3 सीड ऐसा होता है हर बार में, 100 ग्राम लगभग 8 से 9 राउंड में ख़त्म हो जाता है। हमारा 15 से 20 सीड उसमें नुकसान हो जाता है, उछल के भाग जाता है बाहर, वो मखाना नहीं बन पाता है लावा। Once the seeds have been popped, they are cleaned and processed by size again in this machine. ये जो ऊपर वाला जो ये लाल कलर का है, ये भी इसमें साफ होता है, ये और पूरा वाइटनेस बना देता है, बिल्कुल फाइन बना देता है लावा की क्वालिटी को। Rajesh's company processes about 30 metric tons of water lily seeds per season. Out of them, only 40% successfully pop and turn into good quality fox nuts. These popped seeds are now worth up to 550 rupees per kilogram. They'll reach 900 rupees or $11.16 per kilogram in bigger cities like Delhi, and up to $170 per kilogram abroad, where they're quickly gaining popularity. The seeds are rich in fibre, protein and antioxidants. Rajesh exports 40% of the seeds he processes, mostly to the US. तो पिताजी जब करते थे तो हम 1998 से पिताजी के साथ कर रहे हैं, उनको हाथ बटा रहे हैं मखाना में। उस समय में मखाना का भाव 80 रुपये से लेके 90 रुपये किलो के बीच में बिकता था, और वो मखाना लोकल स्तर पे हम लोग बिकते थे, क्योंकि उस समय में मखाना को इतना कोई जानते नहीं थे। पिछले 5 से 10 साल में हमारा इनकम समझिए कि जो पूंजी लगाते थे उसमें भी माइनस चला जाता था, क्योंकि बाज़ार नहीं था इसका। लोग पूजा पाठ में खाते थे तो इतना कंजप्शन होता नहीं था, लेकिन अभी जब लोग जागरूक हुए हैं, इसको खाने लगे हैं, तो पहले से अपेक्षा समझिए कि 30% ज़्यादा हमारा मुनाफा अभी बढ़ा है। अगर पहले हम कभी कोई सीजन में लॉस में चले जाते थे, कोई सीजन में 2 लाख 2.5 लाख। This new market has created new farming opportunities in Bihar. The last few years have seen an increase in rainfall, which has made it harder to grow crops like rice and corn. As a result, some farmers have converted newly flooded areas into sowing areas for water lily plants. The local government launched a scheme to repurpose 104,000 hectares of abandoned lowland for foxnut cultivation. Today, 60% of water lily seed farming takes place in flooded lowlands, as opposed to the ponds and wetlands where the practice originated. And as the habitat of the water lily plant changes, so does the flavour of their popped foxnuts. पहले जो होता था तालाब में होता था, गहरा पानी में होता था, तो उस समय का जो टेस्ट था और अभी जो खेत में हो रहे, दोनों में टेस्ट में अंतर है।
उस समय का जो स्टार्च था वो थोड़ा मोटा रहता था। मोटा मतलब कि सीड बड़ा होता था, तो लावा का साइज भी बड़ा होता था। उस टाइप का अभी ये समस्या आ रही है। वो है खेत में करने से कम पानी के कारण वो समस्या आती है। अगर ज़्यादा पानी अभी भी करें हम 4 फीट पानी में तो वो समस्या नहीं आएगी और टेस्ट में भी कोई चेंजअप नहीं आएगा।